Nature of Industrialization during the Interwar Period. In this video, beta, we will go ahead and we will try to understand how was industrialization during the interwar period. तो एक बारी base हमें पता ही है. I will just take you through that. Try to understand that. जो मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, that the Britishers never wanted industrialization to come in India. वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में industrialization आए. But industrialization came in India because of their own profit reason. वो industrialization सिर्फ इसलिए लेकर आए because they wanted goods in a way which could be easily transported to the developed nations. And also during the period of war, they wanted goods from India. That is when industries were set up in India. तो ये जो दो war हुए, World War I and II, और ये जो हमारा ये प्रोसेस था कि हमें गुड्स बेचने हैं इंडिया के बाहर, प्रोसेस रॉ मटेरियल भेजना है ताकि प्रोसेस्ड गुड इंडिया के बाहर बन पाए. These two were the major reasons why industrialization actually happened in India. So let's read it out. Since India was under British rule for almost 200 years, the British government found it unprofitable and unnecessary to go for industrialization in India. वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में industrialization आए. They never wanted industrialization. It was only after First World War that state patronage for industrial development was visible. तो only after First World War हमने ये देखना शुरू किया कि हाँ, industrialization तो करनी पड़ेगी और आ भी रही है. As Britain supremacy all over the globe came under serious threat. तो जैसे ये World War हुआ, ब्रिटेन वॉज अंडर सीरियस थ्रेट. उसकी पावर बहुत सीरियस थ्रेट में आ गई, दैट इट कुड लूज इट्स पावर फ्रॉम एवरीवेयर, एंड इट डिड. इसी के कुछ साल के अंदर इट स्टार्टेड लूजिंग पावर फ्रॉम डिफरेंट नेशंस. दैट इज व्हेन इट अलाउड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू टेक प्लेस. अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप मतलब जब ये पीछे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अ न्यू पैटर्न इवॉल्व टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तब हमने देखा कि इंडिया में तो एंटरप्रेन्योर्स है ही नहीं. वी सॉ दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. वी सॉ दैट इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर नॉट देयर इन इंडिया. इंडस्ट्रियलिस्ट थे ही नहीं इंडिया में. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेंचर कैपिटल भी नहीं था इंडिया में. लोगों के पास पैसा नहीं था. डर्थ ऑफ मैनेजरियल स्किल्स एंड नो हाउ. और ना ही उनको पता था कि इंडस्ट्रीज चलती कैसे हैं, हाउ इंडस्ट्रीज वर्क. सो ओके, now we wanted industrialization. हमें industrialization चाहिए थी. But how will we bring industrialization when there are no industrialist, no entrepreneur, no capital and no skills? ये सब missing था. This new pattern of industrial growth that evolved came to be known as managing agency system. इस पूरी चीज को, जो नया पैटर्न एक इवॉल्व हो रहा था जिसमें इंडस्ट्रीज आ रही थी, that was called as managing agency system. Early